Securities. I welcome you all. So, in the chat box, before starting off, I want the confirmation from you all that my voice is okay and my screen is visible to you all. Can somebody please respond? All right. So, I've got some of the responses. Thank you so much. So, as you can understand from the name, we are going to talk about, or we are going to discuss about some of the very commonly used option strategies, that is straddles and strangles. It can be short or it can be long. Okay. But the trick over here is that we are also going to learn a new and easiest way, a smart way to execute them. Okay. So both the takeaways are going to be here. Even if you are a beginner, if you don't know what are straddles and strangles, you will understand this in this process. And also, if you are already executing the straddles and strangles already, if you know them, still you are also going to get some of the new insights to how to use them smartly and how to ease out your execution for the strategies. All right. So uh, yes, Sanket ji, मैं हिंदी में भी बात करूंगी. I'll keep it mix. Okay. So एक बार स्टार्ट करने के पहले, जैसे आप लोग ने पहले रिस्पॉन्ड किया, एक और बार रिस्पॉन्ड करके मुझे बता दीजिए कि आपको स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स के बारे में पता है, या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, या फिर how do you use it? Have you ever used it, or it's totally new to you, or have you ever heard the name at all? Whatever you want to respond to it, but just I want to know कि क्या मिक्स है आज अपने पास. Okay. Okay, so many responses. Great. Okay, so majority, okay, thank you so much. So majority ये बोल रहा है कि straddles और strangles एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है. ओके, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट के नाम के बारे में सुना हुआ है, बट बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है. तो आज हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे कि स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या मार्केट सिनेरियो होता है जब इसको यूज करते हैं. ओके. और when we hear about some of the option strategies, for example straddles and strangles, let's take an example this. So जो बिगिनर्स होते हैं उन लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पता नहीं क्या है, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी है या क्या है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स सो इजी. ओके. सो हम लोग वन बाय वन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे. ओके. और हम लोग एग्जीक्यूशन उसका इजी वे में कैसे करना है वो भी देखेंगे. ऑलराइट, लाइव प्लेटफॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगी. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. मीनवाइल अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो Q&A हम लोग लास्ट में लेंगे, बट आपको कोई भी क्वेश्चन होता है या मीनवाइल कुछ आपको प्रॉब्लम लगता है कि वॉइस नहीं आ रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए. ओके. So now let's start. This is a standard disclaimer. The content and explanation shared in this webinar are only for information and educational purpose. Stock market trading investments are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making financial decisions. All right. Now, so when we talk about straddles and strangles, this is a type of, these two are the type of option strategies. Okay. मैं एक थोड़ा सा background, because there are a lot of beginners in the audience today. I'll give a little bit of the background. Okay. जब भी हम लोग प्लेन ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन होता है. लेट्स स्टिक टू ऑप्शन बाइंग एज ऑफ नाउ. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑप्शन सेलर्स आर देयर इन टू द ऑडियंस, बट लेट्स स्टिक टू द ऑप्शन बाइंग फॉर द एग्जांपल. जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. If you can catch the direction of the market, momentum of the market, then you can make good profits. But when the market is not in a momentum, okay, when the market is in range bound zone, you don't get much of the opportunities. Even if you enter in any of the trade, आपका प्रॉफिट मेकिंग का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो काफी लो हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम नहीं होता है मार्केट में. तो अगर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया मार्केट, तो भी बहुत बार प्रीमियम डीके के वजह से स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, राइट, या फिर बहुत मिनिमल प्रॉफिट आता है, या
such kind of scenarios tend to happen. So these kind of strategies, these are useful where you're not sure about the direction. Okay, so it can be used when uh, there is no direction at all. Okay, it's not like you're not sure of the direction. It's not the direction itself is not there in the market. Okay, the market is stuck in a range bound zone. It can be a broader range, it can be a smaller range. We can adjust the strikes based on that. But the market, if the market is in the range bound zone, the kind of these strategies, for example short, straddles and strangles, can help. Okay, so there is one more scenario कि मानिए कि कोई इवेंट है. ओके, लेट्स से आरबीआई का पॉलिसी है, या फिर बजट है, या फिर कोई बड़ा इवेंट है जिसके लिए मार्केट रुका हुआ है. ओके, सो जस्ट बिफोर द इवेंट यू डोंट नो विच साइड डायरेक्शन इट विल टेक. ओके, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द इवेंट. All right, so but then you want to encash that momentum that will be coming after the news out. Okay, सो ऐसे टाइम में क्या होता है कि आपको नहीं पता है कि न्यूज से क्या आउट होगा, राइट. बट जैसे ही न्यूज आउट होगा, मार्केट इतना तेज बिहेव करेगा, इट विल रिस्पॉन्ड सो क्विकली दैट इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू एंटर इन दैट फ्लो. ओके, तो नाउ itself you have to decide what actionable you are going to do. Okay, so in that condition the long straddle and strangle can help. जहाँ पे, so the long straddle and strangle help in a situation where you expect the very big momentum but you are not sure about the direction. Okay, so it can be negative, it can be positive, but you expect some kind of a directional move that is very big. Okay, so I hope that you have got the basic idea कि ये strategies आपको कहाँ पे help करते हैं. Plus अगर आपने if you are there on the social media, or if you have your own if you have your own trading community, आपके कोई दोस्त हैं जो ट्रेड करते हैं, आपने अगर किसी से सुना होगा कि कौन से स्ट्रैटेजीज कॉमनली यूज होते हैं, तो आपने बहुत बारी सुना होगा कि शॉर्ट स्ट्रैडल बहुत कॉमनली यूज होता है. सो वो क्यों कॉमन है, या फिर मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स उसको क्यों पिक करते हैं? क्यों? क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंडी मूव होता है ना, दैट ओनली कम्स इन द मार्केट फॉर 25 to 30%. रिमेनिंग जो आपका 75 to 70% है, उस टाइम में मार्केट रेंज बाउंड रहता है. ओके, सो रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग ने कौन सा स्ट्रैटेजी देखा था? शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल. ओके, सो दैट इज द लॉजिक व्हाई मोस्ट कॉमनली दो स्ट्रैटेजीज आर पिक्ड अप. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स, हमें 4 स्ट्रैटेजीज सीखने पड़ेंगे. ओके, क्योंकि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों में भी शॉर्ट और लॉन्ग दो टाइप होते हैं. सो मोस्ट बेसिकली हम लोग 4 स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे, और फिर उसका एग्जीक्यूशन भी देखेंगे, और उसका एनालिसिस भी देखेंगे कि कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, आपका अंडरलाइन एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद आपका P&L क्या होगा. ओके, ऑल ऑफ दोज डिटेल्स वी आर गोइंग टू सी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रैडल लॉन्ग. ओके, लॉन्ग मतलब उसमें बाइंग इन्वॉल्व होती है, शॉर्ट मतलब सेलिंग इन्वॉल्व होती है. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी बेसिक, बट देन आई जस्ट थॉट आई शुड मेंशन इट वंस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज अ लॉन्ग स्ट्रैडल. ओके, just quickly I'll check the comments till now. Okay, all right, so what is a long straddle? अभी तक हम लोग ने दो सिनेरियोज देखे थे कि या तो मार्केट रेंज बाउंड है, या तो फिर आप कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो. ओके, so this is the strategy. So a long straddle in an option trading strategy that involves buying both a call and a put option on the same underlying asset. Okay, मैं समझाऊंगी इस बात को भी. With the same strike price and expiration date, this strategy is typically used when a trader expects significant volatility in the underlying assets price but is unsure of the direction. याद आया हम लोग का सेकंड सिनेरियो, जहां पे कोई इवेंट है, या फिर there is some scenario where the market is waiting for some kind of outcome to react. Okay, but you are not sure which direction it will go. So in that case the long straddle will help you. Okay, अब long straddle में हम लोग करते क्या है?
लॉन्ग स्ट्रैडल में सो सी यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड मार्केट व्यू दिया हुआ है, डायरेक्शनल टू ईदर साइड। आपको डायरेक्शन लॉन्ग आई मीन पॉजिटिव मोमेंटम आएगा या नेगेटिव मोमेंटम आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इट जस्ट हैज टू बी डायरेक्शनल टू ईदर ऑफ द साइड। ओके, दोनों साइड में भी मोमेंटम आया तो हमें ये फायदा करेगा। ओके, अब इसमें स्ट्राइक सिलेक्शन क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी बनती कैसी है, इसमें हम लोग को कॉल एंड पुट एटीएम स्ट्राइक का बाय करना है। ओके, सो वन कॉल एटीएम बाय एंड अनदर पुट एटीएम बाय। सो एटीएम, I'm not sure if you understand ATM, OTM, ITM concept. So ATM is at the money, okay? OTM is out of the money, ITM is in the money. अब इसको कैसे जानते हैं, ATM को पहले समझते हैं। ओके, जब भी हम लोग कोई ऑप्शन चेन को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस, आपको एक लाइन से चेन मिलती है, आपको ऑप्शन चेन मिलती है, राइट? सो यू सी द चेन ऑफ द स्ट्राइक प्राइजेस। सो आपका जो स्पॉट प्राइस चल रहा होता है, सो द नियरेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक टू द स्पॉट प्राइस इज योर एटीएम। ओके, एट द मनी स्ट्राइक, समझ गया कि आपका जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होगा टू द स्पॉट प्राइस, ऑलराइट, दैट इज योर एटीएम। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 23,600 पर निफ्टी चल रहा है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 23,600 पर अगर निफ्टी चल रहा है तो 23,600 का कॉल एंड 23,600 का पुट दोनों भी एटीएम हो गए। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सिलेक्ट द स्ट्राइक्स। नाउ व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम इन दिस स्ट्रेटेजी, द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड एंड द लॉस इज लिमिटेड। अब इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड एंड लॉस लिमिटेड ऐसा क्यों है, इसका हम लोग प्लेटफॉर्म पर जाके एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि व्हेन द स्ट्राइक्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन यू विल लुक एट द प्रीमियम, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वेल। ओके, सो हर स्ट्रैटेजी हम लोग प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे। सो लेट्स गो टू द प्लेटफॉर्म नाउ। What I'm going to do. So I hope all of you are aware about our new trader web platform, right? So this is the hdfcsec.com, right? I have just landed on hdfcsec.com. Here I'm going into trader web. I just clicked here. So when you click here, you can log in using your existing credentials, or you can even log in using your InvestRight app, and you can scan the QR code from your InvestRight app. Okay, so that's how I have just logged in. So this is the trader web platform. You can explore the features of this platform if you have not done till now. Okay, but I'm going to take you to one of the integrated platforms today. So I'm opening the profile section, and here you can see this NXT option. This is nothing but next option. Okay, this is an integrated platform and it has a lot of advanced F&O trading features. Okay, so we have made it available for all our clients through this integration. So I'm clicking over here. You don't have to put the credentials again because we are giving the SS or single sign-on over here. So you just have to give the authorization and we will be logged in. Okay, so this is the platform. हम लोग इस प्लेटफॉर्म के बाकी फीचर्स भी देखेंगे, बट राइट नाउ लेट्स जस्ट सी द लॉन्ग स्ट्रैडल। ओके, सो आई हैव ओपन्ड ऑप्शन चेन। ऑलराइट, तो लॉन्ग स्ट्रैडल क्या बोलता है कि एटीएम स्ट्राइक के कॉल एंड पुट को हमें बाय करना है। तो अभी एटीएम हमें जानना था, याद है एटीएम का कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था कि स्पॉट प्राइस से नियरेस्ट स्ट्राइक देखने हमें। तो स्पॉट प्राइस अभी क्या है, मतलब ये क्लोजिंग का प्राइस है, बट देन लाइव मार्केट में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेगा। सो अभी क्या चल रहा है, 23,591 नियरेस्ट टू विच स्ट्राइक 23,600। ओके, तो 23,600 का हमें कॉल एंड पुट दोनों भी बाय करना है। ओके, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन बाय। बाय, ऑलराइट, बास्केट में ऐड हो गया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर रही हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखिए, ओके लेट्स जस्ट चेंज द एक्सपायरी बिकॉज आज ही इसका एक्सपायरी था। ओके, ऑप्शन चेन का मैंने एक्सपायरी चेंज कर लिया। ओके, 23,600 को बाय बाय। ऑलराइट, now if you can see over here, this is the payoff graph, right? You can see that ये जो एरिया है जहां पे आपको रेड लाइंस दिख रहे हैं, ये एरिया में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट नहीं देगी, इट विल गिव द लॉस। ओके, और
यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। अब हम अगर यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स देखेंगे 23,270 टू 23,929, इसके बाहर जब ये जाता है तो स्ट्रैटेजी हमारी प्रॉफिटेबल होगी। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक एक्सपेक्टेशन इस स्ट्रैटेजी में यही था कि ईदर साइड डायरेक्शनल मूव आएगा। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग हो गया, आपका प्रेडिक्शन ही रॉन्ग हो गया, तो it will be stuck in a range opposite। वही हो गया कि मतलब if it is not giving a directional move either side, it will be stuck in a range. So what will happen when it is stuck in a range? It will give losses. Okay, so when you add your strikes into to your basket, this particular box will show you the outcome of the strategy as well. Okay, so you can see हमारे strikes added है, CP ATM strike 23,600 23,600। यहाँ पे we can basically choose the entry, हमें market पे करना है या फिर limit price देना है, that can be done later। But we can also see net premium। ओके, नेट प्रीमियम मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कुछ भी बाय या सेल करोगे तो यू ईदर पे द प्रीमियम, okay, or you receive the premium, right? When you are buying the legs, or when you are buying the contracts, you pay the premium. When you are selling the contracts, you receive the premium, but then ultimate premium कितना है सारे strikes को मिला के, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। okay, so we are paying for 329.90 रुपीस का प्रीमियम। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है और मैक्स लॉस 24,735 का है। तो यहाँ पे मैक्स लॉस ये क्या है? मैक्स लॉस आपका 329 इंटू 75 ऐसा हो गया, क्योंकि दोनों भी स्ट्राइक्स आपके बाय किए हुए हैं। तो मैक्सिमम जब आप when the prediction goes wrong, what can happen? Both of these contracts can go to zero, right? So maximum this 212 can go to zero, this 117 can go to zero. So what is your maximum risk over here? That is 329। लॉट साइज क्या है? 75। दैट इज वाई 329 इंटू 75 ये आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। अब मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि मान लो कि ईदर साइड बहुत बड़ा मूव आ गया, you cannot say, it can even be some very big event or very big news which the market was not expecting. So it can even be a move of 1,000 points, 2,000 points. You can never say no, right? So ये 212 it can go to 2,000, this 117 can go to any price. So potentially there is no capping on the upside, right? So that is why your maximum profit potential over here is unlimited. Okay, so that's how this is given. Then it will also show you what is the margin required and all other details, including the break even points. But I hope that you have understood the concept of the long straddle, okay, and the concept of why the profit is unlimited and the risk is limited, and how this calculation is done, right? So once we see all this, we can also see this P&L table. Okay, there are a lot many details that we can see. We can also see Greeks of the strategy, the strategy chart. Okay, strategy chart will show you how the underlying, I mean these two lines, if you can see the blue line and the green line, the blue line is Nifty. Okay, and how the Nifty is going and how the premium is reacting to it. Okay, so you can see Nifty has stayed in a range as of now. So that is where the premium has gone down, right? So is basically is this kind of scenario we should have sold the straddle, okay, because this is range bound, this is not trendy. Okay, but I'm we are just learning the concept, so this is fine, but I'm just giving you an example that see this will show you the comparison between the underlying and the net premium as well. So it is easy for you to understand what's happening with your strategy, if you have taken the right decision or not. Okay, you can also see multi-strike OI. So all the strikes that are involved into your strategy in comparison to the underlying, you can see the graph. Okay, so both the strikes of 23,600 call and put along with this blue line, which is Nifty. Okay, so you can see the comparison between that as well. And of course you can if you click over here on trade,
We can either execute this at the market prices, we can execute at the LTP, or if you have given the limit prices, we can just click on execute and it will be executed on the limit price. Okay, so that's how this long straddle works. Now this is also a smart way because we are getting so many insights about the strategy, but I'll show you one more shortcut over here. Okay, I'm going to this strategy tab and first button strategy watch. Okay, so this platform, so this is nothing but a modified way of a watch list. Okay, those who trade very frequently into straddles and strangles, for them this kind of watch list is like very good feature. Why? Because you can see, you can find the straddles and strangles ka tab on the top, and you can basically select any of the pair. So you don't have to keep adding the strikes into your watch list and then create the straddle and strangle, and then basically जो हम लोग ने प्रोसीजर यहाँ से किया ऑप्शन चेन से, राइट, हम लोग ने मैन्युअली पूरा सिलेक्ट किया, we decided what pair to create, right, all of that. So वो हमें करने की जरूरत नहीं है, we can just go to strategy watch. Right now I have opened Nifty straddle page. Okay, so this will give you various pairs, right? So मान लो कि कभी कभी market में prices keep changing, right? So the ATM strike will also keep changing. So there are a lot of pre-made pairs made over here. Okay, and you can basically choose between them. So अगर यहाँ पे अभी देखिए कि 23,600 कॉल एंड पुट का ऑलरेडी पेयर बना हुआ है. So when we hover around this particular pair, we get this long, short, both the buttons. Okay, so पहले हम लोग ने देखा था कि straddle और strangle में दो टाइप के strategies होते हैं, long and short, both kind, right? अभी तक हम लोग ने सिर्फ लॉन्ग देखा है. सो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग पर क्लिक करती हूँ, सीधा मेरे बास्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए एंड आई कैन एग्जीक्यूट दैट. बट लेट्स से यहाँ से मुझे देखना है कि इसका क्या आउटकम हो सकता है, राइट? सो I can simply click on strategy builder and same way we can okay, let's just change the date. ये मैंने 3rd April change कर लिया. And now let's go to strategy builder. Okay, now if you can see right, यहाँ पे मैंने buy कर लिया. So now you can see this is a long straddle and we can see all the details over here, right? You can also add, if you want to add any other strikes, if you want to modify your strategy, you can do that over here, right? So this is about the yeah, so this is about this strategy watch page where you can simply get the pre-made watch list of the straddles and strangles. So अभी हम लोग second वाले हमारे topic के पास जाएंगे, which is the short straddle. Okay, so if you can see my screen, I hope all of you have understood the long straddle. Now let's go towards the short straddle. Okay, so both ways you will understand, and then I will also again show you what all details we can get on the platform. So here the short straddle strategy is just opposite to the long straddle. Okay, short straddle का यूज होता है जब हमें मार्केट में कोई भी डायरेक्शन एक्सपेक्टेड ही नहीं है. ऐसा नहीं कि अभी नहीं है बाद में आ सकता है, ऐसा नहीं है, हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं है. वी एक्सपेक्ट द मार्केट और दैट पर्टिकुलर अंडरलाइंग एंटिटी to stay in a range itself. Okay, so sometimes when there is nothing exciting happening in the market, generally 70% of the times market will stay in a range. Okay, so that time this strategy will work. Why? Because in this particular strategy what we do, लॉन्ग स्ट्रैडल से जस्ट अपोजिट करना है. जो भी हमारा एट द मनी कॉल एंड पुट है उसको सेल कर देना है. ओके, सेल करने से क्या होता है, वी आर बेसिकली सेलिंग बोथ द एटीएम कॉल एंड पुट एंड द मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. सो दिस होल कॉन्सेप्ट रिमेन्स अराउंड द प्रीमियम डीके. ओके, we are even if the market is staying in a range, we are still approaching the expiry date, right, day by day. So your premium will be decayed, right? Your premium will come down. Why? Because of the loss of time value,
right? So when the time value is lost from the premium, ultimately आपका premium ही कम होगा, right? So when the premium is coming down, you as a seller are making the profit. Okay, so that's the logic behind this strategy. Now, let's see other details. So expected market view, range bound or sideways. Okay, strike selection, we have to sell the ATM call option and we have to also sell the ATM put option. दोनों भी ATM call and put को हमें sell कर देना है. अब इसमें possible outcome क्या है? Profit is limited and loss is unlimited. Okay, so इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के साइड पर कि ऐसा क्यों है. ओके, सेम एग्जांपल लेंगे हम लोग. निफ्टी स्ट्रैडल में ही हूं मैं और सेम 23,600 का ही एग्जांपल लेंगे. आई एम गोइंग इनटू द शॉर्ट स्ट्रैडल. ओके, इसका आउटकम देखते हैं एक बार. Just give me a second, please. Yes, it's here. सो हम लोग ने क्या देखा था कि जब मार्केट में कोई भी रेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, सो नाउ यू सी दिस पे ऑफ ग्राफ. ओके, बीच में जो रेंज है, जो जोन है, यहाँ पे हमें ग्रीन पार्ट मिल रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाहर जाने के बाद ये रेड हो रहा है लाइन, राइट? सो व्हाट इज आवर ब्रेक इवन रेंज? If the entity, or in this example Nifty, stays between 23,270 to 23,930, then we remain positive or we remain profitable. If the Nifty in this case goes beyond this range, the strategy will start giving the losses. Okay, but then if it goes along with the expectation that is there, as per our prediction, then it gives the profit. Okay, but we can see all the details over here, what has to be the range. So based on that we can also change our strategy or whatever. If we see that the market can be little volatile than this range, then we can shift to different strategies. There are multiple ways. Okay, so here also we can see maximum profit 24,750 rupees and maximum loss is unlimited. Now why here the maximum profit is this much and the maximum loss is unlimited is because here we are selling both the strikes, right? So as a seller, when we are going to make the profit, when both of these legs go towards zero, they lose the premium, then we make the profit, right? So maximum this 117 go to zero, this maximum 212 can go to zero, right? So maximum this 117 plus 212, this can be our maximum profit. So this net premium 329 into 75 is our maximum profit. All right, because that is the max we can gain over here. But as a seller, when do we make the losses? When the premium starts to go up. Okay, because we have sold that particular option and we are expecting the premium to go down. But if it if the prediction goes wrong, if the analysis goes wrong, and if it starts to go up, then as a seller we start to make the losses. So in this case, if let's say that either side, what is the basic expectation over here is that Nifty stays in a range. Okay, now if it goes to either side, very big momentum. Okay, अगर ये range इसने तोड़ दिया, okay, 1.5% का ये range है, so इसने अगर ये range तोड़ के इसके बाहर चला गया, तो हम लोग का ओवरऑल लॉस ये स्ट्रैटेजी देना शुरू करेगा. क्यों? क्योंकि कोई भी साइड, इधर साइड अगर बड़ा मूव बनाया, दिस 117 कैन गो टू 1000, दिस 212 कैन गो टू 1000. दैट वे if any big move comes in, this strategy can give the losses. Okay, so this is about the short straddle. But then
this is not a small range. Okay, if the market does not have anything very unexpected coming in, this is, this is not a very this is quite big range. So most commonly people use this particular strategy. Okay, so this is about a short straddle. Now let's go towards our another strategy, that's a strangle. All right, so हम लोग ने अभी तक स्ट्रैडल्स के बारे में देखा. ओके, अब स्ट्रैंगल्स अलग स्ट्रैटेजी होता है. स्ट्रैंगल्स में भी लॉन्ग और शॉर्ट होता है. ओके, इतना ही डिफरेंस है बाइंग का और सेलिंग का. बट हाउ इज स्ट्रैंगल डिफरेंट देन द स्ट्रैडल? अब हम लोग ने स्ट्रैडल में क्या किया था कि कौन से स्ट्राइक्स चूज करे थे एट द मनी. अब स्ट्रैंगल में इतना ही डिफरेंस है कि हम लोग आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को चूज करेंगे. एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है. ओके, हम लोग एक बार ऑप्शन चेन देख ही लेते हैं. सो दिस इज द ऑप्शन चेन. ऑलराइट, this side you can see this is call side and this is the put side. Correct? Always whenever you are going to see the option chain, on your left hand side you will see the calls data, right hand side you will see the puts data. Now एटीएम आप लोग को समझ में आ गया कि जो नियरेस्ट स्ट्राइक टू द स्पॉट प्राइस, that is your at the money. Okay, so right now spot is trading at 23,591. So on the call and put both the side, ATM is your 23,600. Okay, but in the money and out of the money are going to be different to call and put side. Okay, so let's first look at the call side. Right now Nifty is near 23,600. Okay, so all the strikes lower than the ATM, okay, or lower than the spot, okay, spot price, are your in the money strikes. Okay, and all the strikes bigger than your spot price are your out of the money strikes. Okay, so ये जो strikes है कॉल साइड में, ये हमारे इन द मनी स्ट्राइक्स हो गए, ये हमारे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स हो गए. अब पुट साइड में बिल्कुल अपोजिट होता है कि इन द मनी स्ट्राइक्स कौन से होते हैं? All the bigger strikes than your spot price are going to be your in the money strikes, and all the smaller strikes, okay, smaller strike prices than your spot price are going to be your out of the money strikes. Okay, opposite है. कॉल के लिए ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है. पुट के लिए ये ओटीएम है, ये आईटीएम है. ओके, सो अब हम लोग जाते हैं वापस से यहाँ और देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है. अब जो स्ट्रैंगल है वो स्ट्रैडल से कैसे अलग है? बस स्ट्रैंगल में हम लोग एटीएम से शिफ्ट करेंगे ओटीएम पर, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पर शिफ्ट करेंगे. ओके, अब इसमें भी लॉजिक सेम है. जो लॉन्ग स्ट्रैंगल करते हैं उस टाइम में हमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मार्केट में वी आर एक्सपेक्टिंग ईदर साइड वेरी बिग मोमेंटम, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन. दैट्स इट. ओके, सेम लॉजिक विच वी हैड इनटू लॉन्ग स्ट्रैडल एज वेल. ओके, मार्केट एक्सपेक्टेशन इज सेम. But the strike selection is different over here. What we have to do, we have to buy one OTM call option and buy one OTM put option. Okay, so now we have to shift from the ATM. Okay, ATM का strike छोड़कर हमें we have to shift to OTM call and put. All right, now we will go to the next option platform and let's look at the other details. But here just pay attention that here also profit outcome is profit is unlimited and loss is limited. The logic is same because we are buying the contracts, right? Both the contracts we are buying, so loss naturally it's going to be limited because maximum it can come to zero, right? यहाँ पे कोई selling contract है ही नहीं, so maximum exposure आपका जो combined premium है उतना ही होगा. And profit will be unlimited because it can be shooted up any side, so it can be unlimited. But हम लोग एक बार next option पर देखते हैं कि OTM को कैसे select करेंगे, या how do we create this particular strategy. So यहाँ पर भी एक बार मैं आपको OTM का मतलब यहाँ practically समझा देती हूँ. So right now ATM strike हमें समझ में आ गया कि 23,600 nearest है, so that is ATM. So let's move to one OTM strike. Okay, one OTM strike. So one OTM क्या होता है? One OTM मतलब 23,550, 23,650. एक स्ट्राइक हमें OTM जाना है. Okay, we can go two OTMs, 23,500, 23,700. Okay, so generally जो liquidity होता है वो 100 के multiples वाले strikes में better होता है. So let's just move towards the
next strikes, that is 23,500 and 23,700. So call का OTM ऑप्शन कौन सा हो गया? 23,700. ओके, लेट्स बाय दिस. एंड पुट का OTM स्ट्राइक क्या हो गया? 23,500. ओके, ये हमारा ATM है. मैं 100 पॉइंट्स OTM जा रही हूँ. ओके, सो 23,500 एंड 23,700. 23,500 का मैंने पुट बाय कर लिया. अब इसको अगर आप देखेंगे, कि yeah, so if, sorry, I forgot to change the expiry date over here. So I hope you understood the OTM concept. So let's go directly to the strategy watch page and we will go to Nifty Strangle. Okay, so now जो हम लोग ने पेयर चूज किया था, 23,700 कॉल, 23,500 पुट. सो सेम हम लोग यहाँ पर भी चूज करेंगे. ओके, ये पेयर अपना मिल गया है. So let's take an example of this pair itself. So the combined, I mean, current net premium we have is 244. All right. So let's go into the strategy builder and we can see the outcome over here. Okay. So as you can see, यहाँ पे जब हम लोग ने straddle को buy या long या short किया था, तो हमें यहाँ पे pointed point आता था एक exact. But because here we are shifting towards the OTM strike, there will be a maximum loss range. Okay, so and there will also be the break-even point. So here the break-even points are 23,256 and 23,943. So if we, if the Nifty goes beyond these points, then this as a strategy will start to make the profits. Okay. Now, we can also see the max profit is unlimited, max loss is limited to 18,293, margin required we can also check over here, right? So all these details you can check. We can also, so one more feature we have over here is that, let's say अभी हम लोग ऑफ मार्केट स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप ऐसे ऑफ मार्केट स्टडी करते हो, अगर आपको दूसरे दिन तीसरे दिन आपको इसको स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है, सो वी कैन जस्ट सेव दिस बास्केट बाय वॉट एवर नेम यू वांट. ओके, एंड वी कैन सेव इट टू some different day. So ये basket वाला जो tab है इसमें ये add हो जाएगा. So when I come tomorrow in the live market, I can just go to the baskets, I can just click on trade and it will be executed. Okay, so all the good features for the execution are available. So this is about our long strangle. अब जबकि लॉजिक भी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में सेम है, मार्केट एक्सपेक्टेशन सेम है. ओके, स्ट्राइक सिलेक्शन में बस चेंज हुआ कि एट द मनी से आउट ऑफ द मनी हम लोग शिफ्ट करें, बट अल्टीमेटली जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था वो सेम है. तो फिर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में डिफरेंस क्या है? अगर स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इन प्लेस थी तो फिर स्ट्रैंगल बनाया ही क्यों? ओके, एक सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकता है. इसका सोल्यूशन ये है, या फिर इसका आंसर ये है कि एटीएम स्ट्राइक्स का जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है. ओके, एज कंपेयर टू द ओटीएम स्ट्राइक्स. तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे प्राइजेस थे उसमें डिफरेंस है, राइट? हमारा जो मैक्सिमम लॉस भी आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में वो स्ट्रैडल से कम है, राइट? सो इतना ही डिफरेंस है कि एटीएम स्ट्राइक के प्रीमियम ज्यादा होता है, ओटीएम स्ट्राइक के प्रीमियम्स लो होते हैं. इतना ही डिफरेंस जब हम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाते हैं उसमें होता है. ओके, नाउ लेट्स गो बैक एंड लुक एट अ शॉर्ट स्ट्रैंगल. ओके, सो short strangle is also similar to the short straddle. The only difference is we are going to choose the OTM strikes. Okay, so what is the market expected market view? Range bound or sideways? We are going to expect the market to stay in a range, specific range, then only this strategy can benefit us. So what strikes we are going to select? We have to sell one OTM call option and we have to sell one OTM put option. So only one thing we have to remember, even in the long strangle and even in the short strangle, we have to keep the distance same. Okay, so for example, we are now at 23,600.
सो 100 का डिफरेंस मैं कॉल साइड पे ले रही हूँ. ओके, सो 23,700 कॉल ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया. सो आइडियली आई शुड कीप द सेम डिफरेंस ऑन द पुट साइड एज वेल. मतलब 100 पॉइंट्स के गैप से ही मैंने पुट को भी सिलेक्ट करना है. मतलब क्या हुआ कि 23,600 पर मैंने 23,700 का कॉल सिलेक्ट कर लिया, 100 पॉइंट्स ओटीएम. अब मुझे 100 पॉइंट्स ओटीएम पुट को भी सिलेक्ट करना है, दैट हैज टू बी 23,500. ऐसे नहीं होना चाहिए कि 23,700 का कॉल मैंने बाय या सेल कर लिया बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजी, एंड 23,400 23,300 का मैंने पुट को सिलेक्ट किया. सो इट विल नॉट बी in a sync with this strategy. Okay, so the difference or the distance in the strikes has to be same on both the sides. Okay, now the profit is limited, loss is unlimited. Why? Because we are selling both the strikes. That is why it has a potential of unlimited loss. And because again, you know, combined premium maximum होगा हम लोग का profit potential. That is why this is limited. All right, now let's go towards the next option again. I went into strategy watch, and let's see this particular strategy. See, 23,500 पुट को सेल किया हुआ है, 23,700 कॉल को सेल किया हुआ है, और दिस इज द पे ऑफ ग्राफ. ओके, यू कैन सी, अगर ये जोन है, ये जोन के अंदर अगर निफ्टी रहता है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 18,300. तो अगर इस जोन में रहता है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. बट till on the lower side till 23,255 and on the upper side 23,944, इस रेंज में भी रहता है तो भी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होगा. कितना थोड़ा बहुत होगा एग्जैक्टली वो हमें इससे भी पता चलेगा, बॉक्सेस में आ रहा है. ओके, दैट यू कैन एक्सप्लोर. बट इफ द प्राइस स्लाइड्स either side of this zone, okay, we will start making losses. Okay, because that was not expected basically through this strategy. We did this strategy. Why? Because we expected market to stay in a range, right? So that's how this particular strategy is made. And we can also see other details over here. So this is about the long and short straddles and strangles. Now there are, you know, let's say this is about the normal watch list, but let's say if we want to add some of the our you know, some of our own strategies as well. So what we can do, we can create, click on add watch. Okay, so okay, we can just click on add watch, and we can add any watch list over here. So if we want to create our own strategy and save in the watch list, so this is a very improvised version of the watch list, we can say. अगर हमें एक ही कोई contract add करना है, that is also fine. If you want to add a particular strategy, that is also fine. So I am adding a certain strategy. I confirmed, and it will be added over here. Okay, so whatever we add, whatever strategy we create, we will get the net premium and all the details over here. Okay, and we can simply trade it. All right, so just like we saw nifty straddles and strangles, we can see bank nifty straddles, bank nifty strangles. We just have to click on long or short, so that you know, the basket for the uh, execution comes here. You can choose what kind of orders you want to place, normal or intraday, like that. Okay, also हम लोग ने strategy builder का tab देखा था. We can set the alerts, and alerts are so you know, so advanced level over here. We can give the criterias like a certain level of P&L. If it reaches, then you need you know, alert, or certain level of Greeks we can set over here, or certain level of net premium we can set over here. So alert me when greater or equal to, lesser or equal to, and you know, we have to give the input over here. All right, so the alerts are also very advanced. Now you can see this chart button, right? So I'm going into the chart. Now you can see what is the comparison over here. The underlying, that is bank nifty, and the
net premium. So net premium has gone to 0 because the expiry was today. Let's change here. Okay. So I'll show you the same feature again. See. So you can see निफ्टी का चार्ट है, उसके कंपैरिजन में आपका नेट प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस फीचर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ बिगिनर, okay, there is this one easy option tab. So I'm clicking on easy option. So let's say that you don't know how to create the strategies, or you still feel that this is a little complicated for you. So this particular platform asks you a few questions. Where do you think Nifty will go in 6 days? 6 days क्यों? क्योंकि next expiry हमारी 6 days में है, weekly. Okay, so we just have to give the input up, neutral or down. So let's say हम लोग एक example के लिए इसको एक input देते हैं. So it will give us the strategies, ready-made strategies, okay, based on 3 approaches: defensive, balanced, and aggressive. So let's take an example. हम balanced approach के तरफ जाते हैं. So we can see the details over here, more details, and we can find what is the strategy over here that is that the system is giving us, right? So this is nothing but the bull call spread, right? And we can see the payoff graph of the strategy, the maximum profit, maximum loss, and everything, all the details over here. If we click, and we can execute right from here. So getting ready-made strategies is also easy. You can search any of the underlying that you want to search over here, and answer the simple questions, and you can get the ready-made strategies. Also, uh, 1 second. So we are going into strategy builder. I'll show you one more shortcut over here. I clicked on strategy and strategy builder, and then this page is open. Now let's say that you are one step ahead and you know some of the strategy names, but you find difficulty in selecting the strikes. Okay, so now here what we can do, you can see lot many strategy names over here, right? So let's just change the expiry date. I changed it to the next week. Here we just have to give the input. What is your view? Bullish, bearish, neutral, other. Other means volatile. Now let's say, for example, bullish. So for bullish, what all strategies it can suggest us, that the screen is showing us. Okay, so for example, I want to explore the bull call spread. I know little bit about the strategy, but I don't know how to select the strikes and everything. So that is where this particular tab will help you. I just clicked on bull call spread, and the system has given me the ready-made strikes over here. Okay, so now you can see we have selected the strikes, and you can see all the details like maximum profit, maximum loss, and the break-even points, risk reward, everything, the payoff graph, all the details, and we can simply trade from here. Okay, so even if you don't know how to select the strikes, I'll give you one more example. Okay, see. Okay, so whatever strategy you want to go with, based on the view that you have selected, you can explore the strategies over here, and the system will give you the strikes. Is the system will choose the strikes for you. Okay, so these are some of the features. Other than that, of course, this has the option chain. From here we can access the full screen of trading view chart, okay, like this. And then there are many analytical tools as well, market movers, IV, for example, open interest. There are so many, analytical, very in-depth analytical tools we have over here. You should explore it. Okay. Um, Even the F&O ban list, then the baskets tab we had already seen, the simulator. We can see the, strategies, how the strategies performed in the historical time. We can check it over here. We can set the alerts, and on the trades page. So one more pain point this next option platform solves is that when we execute multiple strategies, let's say that you have 4 strategies live, okay, on your positions page. Each strategy has two legs, right? So now you have 8 open positions on your positions page, but you only want to know how your particular one strategy is doing.
as together, two of the legs of that strategy, how they are doing. Because normally what happens, you see the combined P&L of all of your legs open positions. So here what this particular platform does, it will show you group wise P&L, okay, strategy wise P&L, or you can also club it based on the underlying as well. निफ्टी के जितने भी positions है उसका P&L अलग से है. So for a group it basically creates a group, and for a group you can take these many actions. So right now the I had taken this example to show you all in this webinar. So you can see all these options for any of the group. Okay, you can set alert. So for example, one strategy, you have to set a alert that ये strategy एक particular profit को exceed करेगी तो मुझे alert चाहिए. That you can do over here. If the strategy goes to this much of percentage of loss or absolute value of loss, you can set that alert. So many important features as a trader we can get over here. Now this particular platform called Next Option, we have made it available to you all with the help of integration. But when you use it, this is free for your access for first 30 days, and then it will be on the subscription mode. So when let's say that if you start using it today and after 30 days it reflects for the subscription, this is where you can find your subscription plans. You go to the profile section, okay, and you can see the subscriptions button. Here you can see the plans. Okay, so standard and premium are the most popular ones. In the premium, you get the option simulator, this feature extra. Okay, so otherwise, if you stay with the standard plan, this is nothing but 500 a month. That like that the subscription plan is. You can also see the comparison between the subscription plans over here. Okay, but then this has a lot of advanced strategy tools over here. So now, moreover, I have covered all the points over here. But then if you have any doubts, then you can let me know, and we can, I can try to answer your questions. So there is one question: when the underlying condition is same, when to use long straddle or long strangle? So as I explained earlier, the logic behind your long straddle or short straddle and short strangle are going to be same. Okay, the only difference is going to be with the premium. So if your capital allows you, then you can go with the straddle. If your capital is little less, you can go with the strangle. The only difference is the premium. Okay, there is one question. Please show again how to move to next option. All right, I'll show it again. So I'm closing these tabs and fresh मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से जाना है. So this is invest right traders web. इसका भी मैं entry point वापस से बता दे रही हूँ. Okay, I just landed on hdfcsec.com. This is the main web page for HDFC Securities. Now we have to go to Trader Web. I clicked on the Trader Web. Here you can log in with your credentials. Let me log in through QR. 1 second. Okay, so once we log into this platform, we have to go to the profile section and we have to click on next option. And here we have to give the authorization. Once we give the authorization, we are logged in. Okay, I hope it is clear. If not, just let me know. I can show it again.
from a seller's perspective, which strategy is best? So, from buyers and sellers' perspective, I had shown you both the kinds of strategies. Uh, Mostly sellers try to, gain the profits from the premium decay. So, short straddle or short strangle are the strategies most commonly option sellers choose. What if we increase the range zone by 100 points to 300 points on both sides in the strangle? Will the probability of the profit increase? I suggest you, sir, you should explore it on your own. Okay. I'll just give you a clue. When you shift your range increases. So the probability of the profit will increase, but your maximum profit will be little lowered because of the lower premium when you shift to the OTM strikes. Okay, but you should explore it on your own, because looking at the payoff graph and everything, the break-even points, the premium, exact premium numbers, you will get the better idea. But the concept I have given you. Do we have to put stop loss while buying and selling options? So whenever we trade into, whenever we trade, be it F&O, equity, whatever, it is good to have the stop loss, but it's not compulsory. So if you're asking from the execution perspective, it's not compulsory to have the stop loss while entering into the trade. You can, put the stop loss later on as well. Where to find strategy watch? So this is the dashboard, sir. When you log into the next option, this is the main page where you will land. Okay, so this itself is a strategy watch. If you're landed on some another page, which will not definitely happen, but then if it does, just click here on strategy, and the first tab itself is strategy watch. Okay, what about risk? Is it same in both the strategies? I suppose this is about straddle and strangle. So the risk is not same in straddle and strangle. If we talk about the highest risk into short straddle and short strangle, of course, it remains as unlimited. But if we talk about the risk in the long straddle and long strangle, स्ट्रैंगल में आपकी रिस्क रिस्क थोड़ी कम होती है, क्योंकि प्रीमियम आपका लोअर होता है। जो ऑप्शन के स्ट्राइक्स आप चूज करते हो, आपका प्रीमियम कम होता है। सो पोटेंशियली आपका रिस्क लॉन्ग स्ट्रैंगल में कम होता है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल दोनों में भी पोटेंशियल रिस्क आपका अनलिमिटेड ही होता है। Okay, there is one question: can NRIs use this trade? So NRIs can you can do this strategy, but usage of this platform is limited to the resident clients, because there is recent regulation regarding the multiple usages that has come from the exchange. That is why we have to we had to stop giving the access to the integrated platforms. So that is why this next option platform will not be available for the NRI clients. Any more questions, anybody? Thank you so much, Chanda sir.
for the appreciation. I hope that the presentation and the topic and the whole webinar has helped you to understand something new about these strategies. I'm just happy that you have given a positive response. Okay, so there is one more question about this recording of the webinar. So this webinar is also this is being live streamed on the YouTube channel of HDFC Securities as well. So once this webinar ends, you can find the recording of this session. All right. And also all the old webinar recordings can also be found on the YouTube channel of HDFC Securities. So yes, the recordings you can use. So I have almost answered to most of the queries. So thank you so much everybody for joining. And I hope that this has helped you to understand the concept of straddles and strangles and the execution in an easier way. So thank you so much for joining. Do explore the platform and let us know your feedback. All right. Thank you so much.